Hello everyone. Welcome back to Wanderlust and Decor. Yeah, I'm here. Hi, how are you all? A very happy new year to all of you. अगर आपको याद है मेरे चैनल पे मैंने हाल ही में सोमा के घर का होम डेकोर व्लॉग बनाया था जिसमें सोमा ने मुझे बंगाली स्टाइल में रॉयल वेलकम दिया था। साथ ही में उन्होंने मुझे बताया थोड़ा सा बंगाली कल्चर के बारे में। काफ़ी व्यूअर्स को पसंद आया वो व्लॉग। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये दिल से बिल्कुल बंगाली हैं, लेकिन इनको क्रिसमस सेलिब्रेशन का बहुत शौक है। तो आज का व्लॉग सिर्फ इनके क्रिसमस डेकोर पे ही फोकस रहेगा। तो चलते हैं सोमा के घर के अंदर, जानते हैं इनके क्रिसमस के डेकोर के बारे में और ये क्रिसमस पे क्या करती हैं। सोमा, जैसा कि मैंने कहा कि आप बंगाली कल्चर को बिलोंग करते हो, तो ये एकदम से इतना क्रिसमस डेकोरेशन का आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? मैं हमेशा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, सो द क्रिसमस ट्री एंड द लाइट्स एंड द डेकोरेशंस ऑलवेज फैसिनेटेड मी। Soma, you have very fascinating collection of cushions थैंक in यू। various sizes. But there is one cushion which really caught my eye. So what is the story behind mistletoe? Mistletoe is a kind of tree which bears white berries, and it is the only surviving tree in the harsh winters. So it means growth and prosperity, and more so because the couples usually kiss under the mistletoe and they pluck one berry. So did you have your first kiss under the mistletoe? No. I noticed a tiny robe. Can you tell me about it? It belonged to my first child, but then I passed it on to my second one as well. If you notice, there's advent calendar also, and each date has got a small pocket. And I used to put small gifts. So every morning my son used to get up and take out small gifts from there. Christmas socks are one of the most important attractions in Christmas decoration. एंड मैं क्या करती हूँ, इसमें छोटे छोटे चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट्स डाल देती हूँ बच्चों के लिए. Then I have these props for the kids. Other than those eye props, I have this fan as well. And subscribe to Wanderlust and Decor.